नमस्ते, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज हम एक शॉर्ट सेशन रखेंगे और अब आप सीख पाएंगे कि ऐसे कौन से आसन है या फिर कुछ बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस दैट कैन हेल्प यू बैलेंस बेटर। जो हमारे बैलेंसिंग आसन होते हैं उसमें हम बेटर अपने मसल्स को यूज कर सके, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी हो सके और स्ट्रेंथनिंग हो सके। उसके लिए कुछ डायनेमिक पोजेस रहेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस रहेंगी और हो भी सकता है कुछ आसन हम आज करेंगे। तो उसके लिए we will get started अब। And before starting हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे। You can lie down in Shavasana या फिर you can sit in a comfortable pose. And breathe normally and relax your body and your mind. Removing any other thoughts and focusing in the present, getting ready for the session and joining your hand in front of your chest. अब हम एक छोटा सा अपने गुरु लॉर्ड जिसको भी हम मानते हैं उनको याद करते हुए, remembering them, paying gratitude and respect for starting the session. You can repeat after me. Gently opening your eyes. हरिओम तत्सत। मेरा नाम डॉक्टर श्री गोयल है एंड आज का ये सेशन जो मैं लूंगी उसमें हम स्पेसिफिकली कुछ मसल ग्रुप्स पर वर्क करेंगे। तो आपके जो भी बैलेंसिंग आसन हैं, जैसे आपने देखा है हमारे स्टैंडिंग आसन होते हैं, फिर हम लेट कर भी कुछ ऐसे आसन करते हैं, और जो बैठ के जैसे काकासन, मयूरासन, ये सारे जो आसन हो गए, इनमें हमारे कुछ बहुत स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम यूज होती हैं। तो हमारे एब्डोमिनल मसल, लेग मसल, फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, हैंड की भी कुछ ऐसी मसल्स हमारी बार बार यूज हो रही होती हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करना और उनको और मोबाइल बनाना और फ्लेक्सिबल बनाना, अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद हमारे जो आसन है वो वैसे भी बेटर भी हो जाएंगे। जो हमारे वैसे बाकी आसन रहते हैं वो इन मसल ग्रुप्स पे वर्क वैसे भी करेंगे ही, बट इफ वी कैन डू सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, कुछ भी आसन होते हैं, तो उससे हमारे आसन और भी बेटर हो सकते हैं। सो वी विल बी डूइंग दीज आसन्स नाउ। तो उसके लिए आप अपने मैट पे आ सकते हैं एंड मैं आपको कुछ कुछ अलग अलग वेरिएशंस भी बताऊंगी। तो ये सनबर्ड पोज है या फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। ये बस एक वेरिएशन, एक डायनामिक पोज है। सो हियर यू हैव टू कीप योर शोल्डर्स एंड योर हैंड्स इन वन लाइन, और इसके लिए आप काफी सारे वेरिएशन कर सकते हैं, वरना तो आप सिंपली अपने पैरों को ऐसे उठाकर और वापस नीचे रखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीपिंग योर ब्रेथ नॉर्मल। और ऐसा आपको 10 बारी जरूर करना है अपने ईच लेग पर, या फिर आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो इसमें आपके ऑपोजिट पैर और हाथ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने लेफ्ट लेग उठाया और आपका राइट जो हैंड है वो ऊपर जाएगा, फिर आप रख देंगे,
फिर आपका राइट हैंड ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग ऊपर जाएगा, सॉरी, एंड ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये 5 टाइम्स ईच साइड होगा, मतलब पूरा 10 राउंड्स होगा, राइट। उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो डूइंग इट विद मी, आपको अपना राइट हैंड ऊपर करना है एंड लेफ्ट लेग, स्विचिंग योर हैंड्स एंड लेग्स, लेफ्ट हैंड राइट लेग, switching, right hand left leg, right leg left hand, look in the front, right hand left leg, right leg left hand, right hand left leg, raising your right leg and left hand, right hand left leg, right leg left hand, right hand left leg, right leg left hand, keeping your legs straight, knees straight, right hand left leg, and you can relax now. तो आप ये जो अभी मैंने वेरिएशंस बताए, इनमें से कोई भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला भी कर सकते हैं और जिससे प्रीवियस था वो भी कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग डाउन ऑन द मैट, आप लेट सकते हैं मैट पे और आपके जो पैर रहेंगे वो साथ में रहेंगे, कीपिंग योर लेग्स टुगेदर, फीट टुगेदर, एंड कीपिंग योर हैंड्स stretched out on the mat, your palms facing downwards. तो हम अपने हाथों को यूज करेंगे for balance. And now bending your knees, and you will have to lift your core. आपको अपने hips और thighs को lift करना है, जैसे हम bridge pose में करते हैं, something similar to that. इतना ही रखना है और उसके बाद हम अपने लेग को रेज करेंगे। तो जब हम लेग को रेज करेंगे, आपको अपनी नी स्ट्रेट रखना है और दूसरा पैर आपका स्टेबल रहेगा। सो वी विल बी डूइंग 5 टाइम ईच साइड। तो हम जब इस तरीके से करेंगे, आपको अपना पोज मेंटेन रखना है। हियर वी विल बी वर्किंग, वी विल बी एक्टिवेटिंग आवर ग्लूट्स, आवर abdominis मसल्स एंड आवर थाई मसल्स। तो इसके लिए नाउ raising your hips, your core, your abdomen and your thighs. Now raising your right leg and coming back. Don't touch the floor. Raise and release. Raise and release. Raise and release. Raise and release, raise and release, raise and release. Now we will be switching. It will be our left leg. अब आप अपने left leg को raise करेंगे. Raising the left leg, release. Raising the left leg, release. Raising the left leg, release. आपकी बॉडी प्लैंक में ही रहेगी, ऑपोजिट प्लैंक. Raising left leg, release. Raising left leg, release. Raising left leg, release and relax. You can even relax in Shavasana if you want. And from here, हम लोग one side से उठते हुए, we will stand up on the mat. So this is not entirely आंजनेय आसन. आपको पता है हमारा आंजनेय आसन कैसा रहता है. तो अभी आप एक फॉरवर्ड लंज करेंगे
इसमें आपका अभी हम लेफ्ट लेग को आगे रखते हुए राइट लेग को पीछे रखते हुए हम इस तरीके से जाएंगे आगे, थोड़ा फोर्स लगाएंगे और अपने हाथ ऊपर करेंगे। तो जो हमारा आंजनेय आसन रहता है वो इस तरीके से रहता है, राइट। हमारा जो भी ऑपोजिट लेग रहता है उसका हमारा नी टच करता है, बट इसमें फिलहाल वी विल नॉट टच, बट वी कैन गो एज डीप एज यू वांट, राइट। सो स्टार्टिंग विद मी, keeping your left leg forward, look up straight and hold the pose. Keep breathing. Now releasing. Very nice. And changing your leg. अभी आपको अपना लेग चेंज करना है, अब आप राइट पे करेंगे and keeping your hand straight up. Keep breathing. And release. Very nice. तो हम वरना तो इस पोज में रह सकते हैं या फिर आप इसको डायनेमिक कर सकते हैं. So let's do just for a few rounds डायनेमिक तरीके से. कैसे? आपने इस तरीके से रखा, होल्ड किया और फिर शिफ्ट कर दिया, फिर होल्ड किया, फिर आपने शिफ्ट करा, होल्ड किया, फिर आपने चेंज करे लेग्स एंड होल्ड. While we keep doing this, changing the legs, make sure that you keep breathing. And holding and changing. Very nice. We'll relax. So now we'll do another exercise. इस वाले में भी आपको जो है हम लोग कुछ इसी तरीके से लंच करेंगे एंड ये काली आसन के फॉर्म में भी है. आई थिंक आई शो यू लाइक दिस. सो आपको पता है कि काली आसन में हम कैसे करते हैं. अगेन देयर इज दिस पोज. तो आप सिंपली काली आसन में ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ इस तरीके से भी रख सकते हैं. आपको होल्ड करके रखना है, आपको उसको होल्ड कर सकते हैं या फिर आप इसको डायनेमिक अगेन बना सकते हैं. तो आप मानिए कि आप अपने पैरों को सेपरेट भी कर सकते हो और साथ में भी रख सकते हो, जैसे ये चेयर पोज होता है. तो मान लीजिए आपने इस तरीके से रखा, फिर आप उठ जाएंगे. ये स्क्वाट भी है एक तरीके का डायनेमिक स्क्वाट. फिर आप झुक जाएंगे और फिर आप रिलीज कर देंगे. सो ये वाला वेरिएशन भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. जैसे मानिए कि हमने इस तरीके से काली आसन में गए, जितना भी आप खोल सकते हैं. फिर उसके बाद आप इस तरीके से जाएंगे और फिर रिलीज करेंगे. सो नाउ यू कैन डू इट विद मी. लेट्स डू इट फॉर एटलीस्ट 5 times. We'll go down and release and obviously keep breathing, looking forward and release. Try to engage your core. Looking forward and release. Bend your knees and release. Bend your knees and release. Very nice. So I hope the session was useful and आपको बस इसके और repetitions करने हैं. अभी हमने थोड़ा short में करा है, so आप इसके और repetitions कर सकते हैं. I showed you many other variations. आप जैसे हमने लास्ट में दोनों टाइप का किया, वो जो चेयर पोज है उसमें आप अपने पैर पास में रखते हैं, काली आसन जैसा पोज हो गया उसमें आप अपने पैर दूर रखते हैं. तो आप इस तरीके से डिफरेंट पोजेस ट्राई कर सकते हैं. यू कैन सी व्हिचएवर हेल्प्स यू बेटर. आप ऐसे ही आर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए
और प्लैंक पोजेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे जो बिगिनिंग के फ्यू आसन थे उससे हम अपने आर्म स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। अगेन देयर आर मल्टीपल अदर एक्सरसाइजेस दैट आई कैन टेल यू, और हम साथ में कर सकते हैं इफ यू विश। अगर आपको इससे हेल्प हुआ एंड इफ यू वांट कि हम और ऐसे करें, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो. So let's close this session and close our eyes and sitting in a comfortable position and relaxing. And now folding your hands in front of your chest, thanking the Lord, the masters, the gurus, and yourself to be able to do this session. Thank you for joining. Filling your hearts with gratitude and remembering that today you choose joy, gratitude, and humility. With this, we close the session and you can repeat after me. Now opening your eyes. Thank you so much for joining. I hope you keep practicing. I hope to see you in the next video. Hari Om Tat Sat.